Hey everyone, welcome back to my channel. I am Jayesh Dayal and in this video we will talk about chronic inflammation. Previous वीडियो में हमने acute inflammation पर बात करी थी and now let's see a short comparison between the acute and chronic inflammation जिससे कि एक ओवरव्यू मिल जाएगा और आगे टॉपिक को समझने में और आसानी होगी. ओके, सो एक्यूट इन्फ्लामेशन में अपने देखा था कैसे बॉडी का इम्यून सिस्टम क्विकली एक्ट करके जो साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन डेवलप हुए थे बाय द इन्वेडिंग बैक्टीरिया उसे रिजॉल्व करता है और कैसे उसी बैक्टीरिया को एलिमिनेट करता है विद इन 2 weeks. And that's why we use the term acute since it is a very short duration and the major cells involved in this acute inflammation were neutrophils. ठीक है. And when immune system fails to eliminate certain microbes, for example Mycobacterium tuberculosis, then these microbes will remain in the body for several months to years. और जिसके कारण इम्यून सिस्टम लगातार इन पर एक्ट करता है और जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेज होते हैं वो सर्टेन एंजाइम रिलीज करते हैं जिसके कारण जो आसपास की नॉर्मल टिश्यू होती है वो डैमेज होती है. ठीक है. एंड द मेन सेल्स इन्वॉल्व इन क्रॉनिक इन्फ्लामेशन आर मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस. ओके, सो नाउ लेट्स सी हाउ दिस क्रॉनिक इन्फ्लामेशन डेवलप्स. इसके 3 रीजंस होते हैं. फर्स्ट इज क्रॉनिक इन्फ्लामेशन फॉलोइंग एक्यूट इन्फ्लामेशन. इसका मतलब एक्यूट इन्फ्लामेशन के टाइम पे जो बैक्टीरियाज रह जाते हैं टू बी एलिमिनेटेड और किल्ड बाय द immune system, then these bacteria later develop chronic inflammation. For example, osteomyelitis, and in pneumonia terminating into lung abscess. Here abscess means a pus-filled cavity which consists of a chronic inflammatory cells such as the monocyte or macrophages. दूसरा है अगर बार बार एक ही जगह पर इन्फेक्शन हो रहा है बॉडी के, और वी कैन से दैट recurrent attack of acute inflammation on the same part of the body that will ultimately result in development of chronic inflammation. ठीक है. For example, due to recurrent urinary tract infection, chronic pyelonephritis develops. और तीसरा है chronic inflammation starting de novo. इसका मतलब स्टार्टिंग से ही जो इन्फेक्शन था वो क्रॉनिक स्टेट में था और कोई ट्रांजिशन नहीं था एक्यूट से क्रॉनिक की तरफ. फॉर एग्जाम्पल इन ट्यूबरक्लोसिस द माइकोबैक्टीरियम सर्वाइव्स इनसाइड द मैक्रोफेजेस एंड मल्टीप्लाइज. ठीक है. और ट्यूबरक्लोसिस की 3 स्टेज होती हैं विच इज़ प्राइमरी, लेटेंट एंड एक्टिव स्टेज, अबाउट विच वी विल लर्न इन अ सेपरेट वीडियो. So now let's talk about general features of chronic inflammation. In this, there is an infiltration by mononuclear cells. For example, monocytes, macrophages, plasma cells, mast cells, and eosinophils. And here, the monocytes or macrophages are the major cells that takes part in chronic infection. यहाँ पर टिश्यू मैक्रोफेजेस का मतलब है कि डिफरेंट टिश्यूज़ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्रोफेजेस देखने को मिलते हैं. मतलब जब मोनोसाइट ट्रांसमाइग्रेट करते हैं फ्रॉम ब्लड टू अ स्पेसिफिक टिश्यू, सो दे ट्रांसफॉर्म इनटू अ स्पेसिफिक मैक्रोफेज. फॉर एग्जांपल, ऑस्टियोक्लास्ट इन बोन, माइक्रोग्लियल सेल्स इन CNS, लैंगरहैंस सेल्स इन स्किन, कफर सेल्स इन लिवर एंड डस्ट सेल्स और एल्वियोलर मैक्रोफेजेस इन लंग्स. ठीक है. तो सेकंड आता है टिश्यू डिस्ट्रक्शन और नेक्रोसिस विच इज़ अ सेंट्रल फीचर ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन. और ये चीज़ एक्यूट इन्फ्लामेशन में नहीं थी बिकॉज एक्यूट इन्फ्लामेशन बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है एंड ये फीचर डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है, लाइक सेवरल मंथ्स टू ईयर्स. ओके. तो इसमें होता क्या है कि जब एक्टिवेटेड मैक्रोफेज माइक्रोब को किल नहीं कर पाते हैं, सो दे स्टार्ट रिलीजिंग सम केमिकल सब्सटेंसेस टू एक्यूमुलेट मोर इम्यून सेल्स. बट यही केमिकल सब्सटेंसेस आसपास के टिश्यू को डैमेज कर देते हैं और टिश्यू डिस्ट्रक्शन इसलिए एक सेंट्रल फीचर होता है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का. ठीक है. एंड दीज केमिकल सब्सटेंसेस आर प्रोटीएजेस, इलास्टेजेस, कोलेजनेसेस और लाइपेज. रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज एज फ्री रेडिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजिंग द टिश्यूज एंड सर्टेन साइटोकाइंस सच एज इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 8 आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस. ओके. एंड द थर्ड फीचर इन दिस इज प्रोलिफरेटिव चेंजेस. मीन्स जब टिश्यू डैमेज होती है सो द ब्लड वेसल्स अराउंड दैट एरिया स्टार्ट्स टू प्रोलिफरेट, जिसके कारण न्यू स्मॉल ब्लड वेसल्स फॉर्म होती है और इसी के साथ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो एक फाइब्रस स्कार फॉर्म करते हैं टू हील दैट डैमेज टिश्यू. ठीक है. सो दीज आर द जनरल फीचर्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन एंड नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. फर्स्ट इज क्रॉनिक नॉन स्पेसिफिक. इसमें फाइब्रस स्कार फॉर्म होता है एज अ रिजल्ट ऑफ टिश्यू रिपेयर और कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग नहीं मिलती है. फॉर एग्जांपल इन क्रॉनिक अल्सर्स जिसमें डैमेज टिश्यू काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है टू हील इटसेल्फ, लाइक इन केस ऑफ डायबिटिक फुट अल्सर
and ischemic ulcers. Okay, and other examples are lung abscess and fistulous tract. So जब भी कोई abscess cavity rupture होती है and the path taken by the contents of that abscess cavity to drain will form fistulous tract. For example, as a complication of lung abscess, a fistula is formed known as the bronchopleural fistula. Okay, and second example is the anal fistula, which connects the infected gland in the anal region to the skin outside. Now, second type is chronic granulomatous. इसमें एक specific granuloma form होता है as a result of type 4 hypersensitivity reaction, which is a characteristic feature in several diseases. For example, in infective diseases such as tuberculosis, leprosy, syphilis, cat scratch disease, and in malaria, a specific granuloma is seen, such as the caseating granuloma in tuberculosis, where the central part of that granuloma is cheese-like. And in cat scratch disease, the granuloma will have radiating margins, which will give a star-like appearance. And in malaria, Dirk's granuloma is seen, which is found in the brain tissue, which occurs as a result of the obstruction of the blood vessels by the Plasmodium parasite. And in non-infective causes such as sarcoidosis, a naked granuloma is seen, about which we will discuss in a while. And then in Crohn's disease, which is an inflammatory bowel disease, occurs by autoimmune mechanism. Then we have granuloma formation by foreign bodies such as the talc, suture and silicon. अब बात करते हैं कि ये granuloma होता क्या है. So, granuloma is defined as a circumscribed tiny lesion about 1 millimeter in diameter, which is composed predominantly of collection of modified macrophages known as the epithelioid cells and rimmed at periphery by lymphoid cells, and mostly it is the T cells. Okay. Here the image A shows how a granuloma looks under a microscope and image B shows its diagrammatic representation. ठीक है, और इसमें जो ग्रीन कलर के सेल्स शो किए गए हैं वो है lymphocytes, which forms a collar of the granuloma or the peripheral rim. And in the center, modified macrophages are present as epithelioid cells along with some bacteria. और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि it is a type 4 hypersensitivity reaction, also known as delayed type of immune reaction, which is a protective mechanism to limit the spread of microbe out of these granulomas. ठीक है. एंड टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन को डिलेड टाइप ऑफ इम्यून रिएक्शन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है डेवलप होने में. दैट्स वाई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन परसिस्ट फॉर सेवरल मंथ्स टू ईयर्स. अब अपन बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ ग्रैनुलोमा, मतलब कि ये ग्रैनुलोमा फॉर्म कैसे होता है, इसके स्टेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट स्टेप इज इनगल्फमेंट बाय मैक्रोफेजेस, विच मीन्स whenever a macrophage engulf a foreign body or a bacteria, for example Mycobacterium tuberculosis, and when it fails to digest it, it will present this antigen to CD4 helper T cells. Okay. Now these CD4 T cells will release interleukin 1, interleukin 2, interferon gamma and tumor necrosis factor alpha, which will cause the activation of more tissue macrophages and accumulation of these macrophages in a particular site. Okay. And also the proliferation of the T cells. And then these macrophages will transform themselves into the epithelioid cells, and then these epithelioid cells will fuse together to form the giant cells. And now these cells will secrete a platelet-derived growth factor, in short PDGF, which will cause the activation of more macrophages and their multiplication. So now finally a granuloma will form, and now we will see the morphology of this granuloma, like what are the cells present and how they are arranged. So first is epithelioid cells, which are modified macrophages having a slipper-shaped nucleus, as you can see in this image clearly, and these cells are seen arranged just outside the center of the granuloma. और दूसरे टाइप के सेल्स जो मिलते हैं वो है मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स, which are formed by the fusion of the adjacent epithelioid cells. और इसमें भी अलग अलग टाइप के जाइंट सेल देखने को मिलते हैं. For example, Langerhans giant cells, which have a nuclear arrangement in the form of a horseshoe और अ नेकलेस. ठीक है. फिर टॉटिन जाइंट सेल्स होते हैं जिनका न्यूक्लियर अरेंजमेंट एक रिंग टाइप होता है और सेंटर में प्रेजेंट होता है, एंड दे आर सीन इन एरियाज ऑफ हाई लिपिड कंटेंट्स सच एज इन फैट नेक्रोसिस. फिर तीसरे हैं फॉरेन बॉडी जाइंट सेल्स, जिसमें जो न्यूक्लियर अरेंजमेंट होता है वो रैंडम होता है इन द साइटोप्लाज्म. देन लिम्फोसाइट्स, मेनली टी सेल्स, आर प्रेजेंट विच फॉर्म्स द कॉलर ऑफ द ग्रैनुलोमा. एंड नाउ इफ यू रिकॉल साइकोइडोसिस के केस में नेकेड ग्रैनुलोमा मिलते हैं, जिसका मतलब
उनमें ये टी सेल्स वाली जो कॉलर होती है वो नहीं होती है, एंड सो दे आर कॉल्ड एज नेकेड ग्रेनुलोमास. Necrosis or necrotic core मिलता है in the center of a granuloma, and in the case of tuberculosis we see a central cassation necrosis, and here cassation means cheesy-like appearance, okay, which consists of a dead cells or the bacteria. Then at the periphery we see fibrosis because of the multiplying fibroblast in an attempt to heal the damaged tissue. Here you can see the arrangement of different cells in a granuloma, starting from the center, which is composed of a necrotic debris. Then just outside it, the epithelioid cells are present along with the macrophages, and the giant cells are not shown in this image, which is also present in this layer. And then the outside layer, the outermost layer, will have the collar of a lymphocytes, mainly T lymphocytes. Okay. And now lastly, we'll see the different types of granuloma seen in different diseases. So first is caseating granuloma, which is seen in tuberculosis. And here in this image, you can see the central cassation necrosis, which gives a cheese-like appearance. Second is Dirk's granuloma, which is seen in malaria and is found in the brain tissue. And it occurs because of the obstruction of the brain blood vessels by the Plasmodium parasites. And now third is the stellate or star-shaped granuloma, which is seen in the cat scratch disease or lymphogranuloma vernum. And here in this image, you can see the margins of this granuloma is radiating, which looks like a star somewhat. So that's why it is given a name of star-shaped granuloma. Now fourth is the donut or ring granuloma, which is seen in the Q fever. And in this donut granuloma, the central part is washed off during the slight fixation, and that's why an empty space is seen. So with this, we are done with our topic of chronic inflammation, and now I hope you can make the difference between the acute and the chronic inflammation easily. So see you in the next video. Stay tuned and thanks for watching.